हेलो एंड वेलकम ऑल गाइस। ब्रेन अप चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन JKPSI एग्जाम जो कि पॉलिटिक्स सेक्शन के रिलेटेड होंगे। तो आई होप these questions will help you in your exams. So this is the logo of JNK please, and this is a quote that we can read. Somewhere someone out there is training hard. If you are not, and by chance the two of you meet, you will lose. Therefore, train hard guys and you will win. Train hard and train hard. चलो अब हम चलते हैं टाइम टू प्रैक्टिस पॉलिटी। एंड एट लास्ट मैं आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देता हूँ जहाँ पे पीडीएफ्स अवेलेबल होगी। और प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। That is, with reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct? So, they shall be enforceable by courts. They shall not be enforceable by any courts. The principle laid down in this part ought to influence the making of laws by the state. तो गाइज आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, जस्ट गेस पार्ट 4 में क्या आता है। पार्ट 4 में आते हैं DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। They shall be enforceable courts, 1 is not correct. They shall not be, 2 is correct. The principle laid down in this part are to influence the making of laws by 2 and 3 is correct. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 2 and 3 रहेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है ना गाइज, ये आपको मदद करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मतलब JKPSI में एग्जाम्स आ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट्स पढ़ के इसी के रिलेटेड इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। दैट्स वाई PYQs इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आर्टिकल 37 क्या कहता है? प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 shall not be enforced by any court. Article 37 कहता है of the Indian Constitution all states that it shall be the duty of the states to apply these principles in making laws as they are fundamental in governance of the country. Next question. The ninth tool was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of A. Jawaharlal Nehru, B. Lal Bahadur Shastri, C. Indira Gandhi, D. Moraji Desai. तो गाइस, तो राइट आंसर क्या है इसका? इट विल बी ए जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की प्राइम मिनिस्टर के दौरान 9 शेड्यूल को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट विल हैव द jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Number second, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India. तो नो, ये जो पहला ऑप्शन रहेगा इसका जो आंसर रहेगा दैट्स डी, नीदर वन नॉट टू। The Constitution itself confers the power of judicial review already on the both Supreme Courts and High Courts. That is Article 12. Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of the legal legislative enactments and executive orders of the both central and state government. On examination, if they are found to be violative of the Constitution, they can be declared illegal, unconstitutional, null and void by the judiciary. तो और कोहिलो केस में 2007 में द सुप्रीम कोर्ट ने रूल एक जजमेंट दिया था दैट देयर कुड बी कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ जुडिशियल रिव्यू के ब्लैंकेट में नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट of any court during his term of office. The emoluments and allowance of the governor of state shall not be diminished during his term of office. तो गाइस कैस कीजिए।
नंबर 1 भी सही है, नंबर 2 भी सही, तो इसका आंसर रहेगा बोथ 1 एंड 2। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो एंजॉय करता है पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ही इज इम्यून फ्रॉम any criminal proceedings. Even in respect of his personal acts, he cannot be arrested or imprisoned. His emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office. Thus, both दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो guys, this question can be expected in JKPSI exam. Under which rule of the Constitution of India can transfer tribal land to private parties for mining to be declared null and void? तो ट्राइबल जो आते हैं दैट्स इन द फिफ्थ शेड्यूल आते हैं। That's B. Indian Constitution provides autonomy to the tribal areas in the matter go under fifth and sixth schedule के अंदर tribals आते हैं। ऐसे ही पढ़िएगा बाकी for your knowledge. Now it is a good question. Which of the following amendments to Indian Constitution empowers President to send back any matter of request to Council of Ministers? तो गाइस गैस कीजिए। 839 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी, 44th अमेंडमेंट एक्ट। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, तो जो 1976 की रहेगी दैट इज गाइस 4 + 2 = 6। मेड इट explicit that the president shall, in accordance with the advice of councillor ministers, की सबसे चलना चाहिए। एंड द 44th अमेंडमेंट 1978 हाउएवर ऐड किया दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक, एडवाइस को बैक कर सकता है, सेंड रिकमेंडेशन, बट इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वापस से सेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू मस्ट एक्सेप्ट इट, बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप आपने गाइस ये पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग objectives is not embedded in the preamble to the Constitution of India? Guys, एक बात कहूँ मैं, preamble जो है प्लीज़ उसको रीड करके आइएगा, रिमेंबर करके आइएगा, क्योंकि preamble से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इट्स एक इंडेक्स की तरह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो प्लीज़ एक बार उसको थॉरोली रीड कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सा? लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दैट आंसर इज बी। द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया मेंशन्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रीएम्बल हमने, एंड ऑल्सो प्रीएम्बल जो हमने लिया था वो यूएसए से लिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following suggests that the governor should be eminent person from outside a state and should be discharged figure without intense political links and should not have taken part in the politics in recent past? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज सकारिया कमीशन और सेंटर सकारिया कमीशन का। गाइज ये भी डेट भी याद कीजिएगा इनका, फर्स्ट टर्म कब आया था, राजमनर कमेटी 1969, और या नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द सकारिया कमीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। The Sakarya Commission Charter 2 was to examine the relationship and balance of power between the state and central government in the country and suggest changes within the framework of constitution. वैसे राइट कीजिएगा। आर्टिकल 56 पता है आप? आर्टिकल 56 व्हाट इज? इट्स नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। Which one of the following are considered as a socialistic principles under DPSPs to secure living wage for all workers? DPSPs गाइस आपने पढ़ा ही होगा ना, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक स्टार्ट होता है।
कौन कौन से DPSP सोशलिस्टिक हैं? तो गाइस सोशलिस्ट तो पता ही होगा ना आपको, सोशल वेलफेयर के लिए जो सही रहते हैं, to secure a living wage for all workers, to promote educational, economic interests of SCs, STs and other weaker sections from exploitation, to take first participation of the workers in the management industry, to organize विलेज पंचायत जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल से आता है। आई थिंक आर्टिकल 40। तो 4 को एलिमिनेट करेंगे, 4 को, दैट इज 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3। जो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा दैट इज A 1 and 3, to secure a living wage for all workers and to take steps to secure the participation of workers in the management of industries। ये देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड DPS: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंडिविजुअल। द सोशलिस्ट प्रिंसिपल लेड डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिस्ट स्टेट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 43। ये आर्टिकल्स भी गाइस याद कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज फॉर ऑल वर्कर्स, आर्टिकल 43। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो गाइज मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तब जाके मैं आगे जाके इससे बेटर कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, ताकि जो आप इससे प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को देखें, रीड करें इनकी एक्सप्लेनेशंस, एंड आई होप कि आप सेल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन से। ये जो मैं आपके कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। विच वन ऑफ द गिवन पेयर्स इज़ नॉट करेक्ट? गाइस ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखें, कभी हमें नॉट करेक्ट नहीं दिखता है तो हम जल्दबाजी में गलत करते हैं। सो प्लीज़ पॉइंट आउट दिस थिंग फर्स्ट। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ, ऑस्ट्रेलियन कंकरेंट लिस्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कोड, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। रूल ऑफ लॉ ये भी सही है। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडवाइजरी ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने शायद यूएसए से लिया है। नहीं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideals of the constitution which is based। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वन of the ways by which a citizen loses his citizenship by means of termination? गाइस आपने citizenship पढ़ा होगा ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि पॉलिटी का। citizen obtain a citizenship by fraud, if citizen has unlawfully traded or communicated with enemy during the war, when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, when a person voluntarily renounces his Indian citizenship। तो सर, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्योर। जब एक इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्योर करता है ना दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो उसकी जो अपनी कंट्री की होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। The Citizenship Act 1955 prescribes 3 ways of losing citizenship: renunciation, termination, and deprivation। These are the 3 ways that you should remember, guys। कौन कौन सी? renunciation, termination, and deprivation, through which a citizen loses his citizenship। मैंने इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर करता है गाइज, पढ़िएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, सिटीजनशिप चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, एंड उनके आर्टिकल्स को भी दैट आर इन द सिटीजनशिप उनको भी रिवाइज गो थ्रू कीजिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे वहाँ पे, बट इनसे एक आइडिया मिलता है, नॉलेज गेन होती है, वहाँ पे इजीनेस आ जाएगी आपको आंसर सॉल्व करने में। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 में, 368 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
All constitutional bills ought to be deemed as public bills and must be introduced by a minister. No. Prior president recommendation is not necessary to introduce a bill. Normally, the bill must be passed in each house by special majority. Correct. Second is not there. Second is not there. Second is not there. 1, 3. Or अब दे B या C. The correct answer is C. An amendment of the constitution can be initiated only in either house of parliament. किसी भी हाउस में कर सकते हैं. एंड प्रेयर परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस किसी भी हाउस में बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर. कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते विद इट मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इट डज नॉट रिक्वायर परमिशन प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है एंड स्पेशल मेजॉरिटी पहले ही बताया था मैंने. Oh. Now comes the one of the important question. In which of the following cases the doctrine of basic structure was laid down? Minerva Mills case, Shankari Prasad case, Keshavananda Bharati case, and Golaknath case. The correct answer is C. Keshavananda Bharati case. Recently न्यूज में भी था केशवानंदा भारती केस. इसकी डेथ हो गई थी. 1973 में the basic structure doctrine was formally introduced with rigorous legal reasoning in Justice Hansraj Khanna, केशवानंदा भारती की स्टेट ऑफ केरला. हमारी यूटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. Which of the following statements with regard to creation of a new state or alteration of boundaries of a state is correct? तो स्टेटमेंट एक है an amendment has to be moved in the parliament under article 368 of the constitution. No. Ratification by one half of the states is necessary after the amendment is made with the parliament. No. Legislation can be passed by simple majority both houses of parliament. Yes. Only 3 guys. C. Correct answer. अंडर आर्टिकल 3 हम कर सकते हैं. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है यूनियन एंड टेरिटरी. आर्टिकल 3 के अंडर द पार्लियामेंट कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट और मेक इट द यूटी और उसको एरिया बढ़ा भी सकती है. इट्स अंडर आर्टिकल 3. Look at this. Article 3 assigns the parliament to enact legislation the formation of a new state, operating territory from a state, uniting दो से ज़्यादा स्टेट यूनाइट कर सकती है, uniting any territory of a part of state. ये guys पढ़िएगा. Now one of the next important question जो आता है, which of the following was the chairman of National Commission for Review of the Constitution 2000 में कौन था? ये भी हमने पढ़ा था ऊपर ऑप्शंस में. आंसर इज ए एम एन वेंकटचेलिया. गैस इसलिए हम बोलते हैं पी वाई क्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, बिकॉज पी वाई क्यूज के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के लिए. सो मस्ट गो थ्रू पी वाई क्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन. गैस ये पढ़िएगा. Now the question is regarding the speaker. Which of the following statements regarding the casting vote in parliament is correct? It is casted by speaker or a person acting as such. It is cast in addition to voting in first instance. It is cast in case of equality of votes. It is always cast to maintain status quo. The right answer is question करेगा B. That is, it is cast by speaker. Casting vote is cast by speaker or a person acting such. एंड थर्ड इट्स कास्ट इन केस इक्वालिटी ऑफ वोट जब होते हैं देन स्पीकर कास्ट है वोट टाई को तोड़ने के लिए. एंड अदर इंफॉर्मेशन गाइस, अगर लोकसभा डिसॉल्व भी होती है ना बट स्पीकर अपना ऑफिस छोड़ के नहीं जाता है. काइंडली एड इट न्यू इन्फॉर्मेशन. इक्वालिटी बिफोर लॉ, all the equal protection of laws within the territory of India guaranteed by which of the following the Constitution? Article 14. Important question guys ये भी है.
आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोडिफाइज द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन विच आर, जो कि डिफाइन किए गए पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 36. One such one such right is the right to equality, which is protected under the Article 14 to 18. Article 14 is the most significant regarding the equality. Another important question, guys: which one of the following statement about the Vice President of India is not correct? इनमें से कौन सा statement है जो correct नहीं है regarding Vice President of India? He is not eligible for re-election. He must be less than he must not be less than, ये सही है, 35 years of age for president और vice president के लिए, it's सही. He is elected by members of an electoral consisting of the members of both houses of parliament, that's also right. His term of office is 5 years, that's also right, that's also right. He is not eligible for re-election, that is wrong, मतलब is not correct. हमारा जवाब ये रहेगा. President, whether is a president or vice president, they can be elected any number of times. These are the conditions to be the vice president of India. Kindly go through it. A motion of no confidence is moved against an individual minister, the council of ministers, the prime minister, or a political party. And the correct answer is council of ministers. A no confidence motion is a parliamentary motion that is moved in Lok Sabha against the entire council of ministers, stating that they are no longer deemed to fit hold positions or responsibility due to inadequacy in some respect to the failure to carry out delegations. These are devices that are used in the parliament. These are the motions. What is the procedure of this motion? A motion of no confidence can be admitted minimum जब 50 members support करेंगे, and the speaker then once satisfied the motion in order will ask the house adopt. स्पीकर ही डिसाइड करेगा मोशन अडॉप्ट होगी या नहीं होगी. अगर ये मोशन पास हो गई देन गवर्नमेंट को वैकेट करना होगा अपने ऑफिस के, एंड दे हैव टू रिजाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स? जो सिटीजन्स, द राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स आर आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 29, 30. These are the rights that are available to the citizens only. Which one of the following fundamental rights are available to non-citizens? Freedom of speech, freedom of conscience, non-discrimination in the matters of employment, protection against selection. Freedom of conscience is available, and non-discrimination in matters of employment is also available. These are rights that are available to the foreigners or non-citizens. Which one of the following statement is not correct? Article 117 of the United Religious Financial Bill. Correct है. Rajya Sabha has a power to reject or amend financial bill. Financial bill is introduced only in Rajya Sabha. Joint sitting cannot be called in case of a financial bill. The correct answer is 3. This is correct. This is also correct. But financial bill कहीं भी लोकसभा में ही लग सकते हैं और राज्यसभा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. Sorry guys, let's take the explanation. Article 117 of the Constitution deals with the financial bills. Financial bill दो टाइप की होती है, financial bill 1, financial bill 2. That's under Article 117. 117 दोनों की दोनों होती है. Financial bill 1 जो होता है, it does not contain matters of Article 110 exclusively, but other matters of general legislation. It can be introduced only in Lok Sabha. Financial bill first can be only introduced in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Hence, third statement is incorrect. Regarding financial bill second, it contains provisions on expenditure from the Consolidated Fund of India, but does not include any matters mentioned in Article 110. जो कि मैंने पहले ही बताया था, it can be introduced in either house of parliament. Which of the following is not correct? Part 9 of the Constitution contains provisions for panchayats. Part 2
Citizenship. Part 9a, municipalities. Part 10 of the contains provisions of language. आंसर इज डी। पार्ट 10 में आते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज अंडर आर्टिकल 244 पढ़िएगा। पार्ट 17 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। रिमेंबर दिस। द feature of impeachment of the president in the Indian constitution has been borrowed from the constitution of impeachment हमने कहाँ से लाया है that's United States of America. Impeachment of president were taken from the USA constitution. Apart from this, impeachment of president, functions of president, vice president, removal of Supreme Court and High Court judge, fundamental rights, judicial review, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लाई है। काइंडली ग्रैब दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये याद, अब इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखिए आर्टिकल 110 जो है डील्स विद द मनी बिल। Which one of the following is a bulwark of personal freedom? Habeas corpus. These are the writs that are issued by High Court and Supreme Court. High Court, Supreme Court issue करते हैं writs under Article 32, while as High Court issues writs under Article 226. The writ of habeas corpus is issued by the another court a person who has been detained another person to produce later before the court. The word habeas corpus means to have the body of. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसमें से आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 266 के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। आर्टिकल 266 2 के अंडर पब्लिक अकाउंट भी आता है एंड आर्टिकल 267 के अंडर आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा गाइस। सारी की सारी मनी जो रिसीव होती है बाय गवर्नमेंट इन रिपेमेंट और मनी रिसीव बाय गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स क्या इन फंड्स को ऑडिट करता है, ये लिखा हुआ है। गांधी जो पीडीएफ रहेगी हमारी इसमें गाइस। तो ये आज की प्रैक्टिस सेशन था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। ये आपको दोनों बेनिफिट्स देगा। एक तो प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है और आपका रिवाइज भी हो रहा है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स कम है वो भी हो रहे हैं। अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं किसी कॉन्सेप्ट पे आपको लेक्चर दूँ लाइक प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स या कुछ और स्टेट लेजिस्लेचर में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट ऑन दैट एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन Allah Hafiz and kindly join my telegram channel. I am providing a link in the video, so ये PDF आपको वहीं पे अवेलेबल होगी। So guys, work hard और क्या ही कर सकते हो, but smartly। और इन फ्यूचर में करंट अफेयर्स भी लाऊंगा और कुछ टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा। इससे पहले भी मैंने JKPSI से खुद भी दिया था, वो भी क्वालिफाई किया था एंड इस बार भी करेंगे। तो गाइस हम दोनों हम सब मिल के इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। सो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। विद दिस I will take your leave now. Thank you guys. Love you.